Assalamu alaikum. My name is Memuna Munir and my group members are Khansa Zainab, Iman Mubin, Iram Mubashir and Zainab Masood. We belong to Fatma Jana Women University, Department Business Administration, Semester 2 and Group B. The topic for our presentation is education. So, education has various meanings. According to some learned people, the word education came from the Latin term educatum, that means the act of teaching or training. According to a few others, the word education has originated from another Latin term, educare, which means to lead forth or to come out. A group of educationalists say that it has come from another Latin word, educare, which means to bring up or to raise. Education, in its general sense, is a form of learning in which the knowledge, skills, and habits of a group of people are transferred from one generation to the next through teaching, training, or research. In Plato's concept, education is the capacity to feel pleasure and pain at the right moment. It develops in the body and in the soul of the pupil all the beauty and all the perfection which he is capable of. According to Aristotle, education is the creation of sound mind in a sound body. It develops man's faculty, especially his mind, so that he may be able to enjoy the contemplation of supreme truth, goodness, and beauty, of which perfect happiness essentially consists. Next, we have aims of education. Without an aim, any activity lacks force and direction. Education is a never ending journey. Its primary goal is to promote a child's holistic development. As the child grows, the results of education are visible in the form of better and more prosperous life. This is mainly because education empowers people to become mindful of their liberties and obligations. In our societal structure, it equips them with cognitive ability, physical growth, morals, and ideas. In this way, by empowering future citizens, education also benefits society. So, it has vocational aim, knowledge, complete living, culture development, citizenship, and spiritual aim. Vocational aim enables students to make a good living in the future. It makes them independent and successful, not just culturally but also financially. The advocates of this aim say that all the knowledge that the child has gained, all the culture the child has acquired in the school will be of no use if he cannot make both ends meet as an adult member of the community. Education with the vocational aim will prepare each individual for an occupation which will suit to his needs, abilities, interests, and attitudes. Next aim is knowledge. Knowledge is as essential for intellectual development as nutrition is for body development. It encourages lifestyle changes, self realization, and societal progress. Man becomes resourceful through knowledge. Socrates said that one who had true knowledge could not be either than virtuous. Next aim is complete living. Education must familiarize a child with the actions of healthy living. These may include childbearing and child rearing, consciousness, activities connected to socio-economic and cultural responsibilities. The eminent naturalistic philosopher, educationalist, and biologist of the 19th century, Herbert Spencer, expounded complete living aim of education. He writes in his treatise on education, to prepare us for complete living is the function which education has to discharge, and the only mode of judging any educational course is to judge in what degree it discharges such function. Next aim is moral development. Herbert Spencer, an outstanding English educationalist, placed a high value on this educational goal. He considered that education should help children develop moral ideas. Education must develop attributes like kindness, integrity, courage, respect, and honesty. Next is character development. According to some educational systems, this is the ultimate goal of education.
It is believed that education comprises the nurturing of particular human ideals. Next aim is self realization. According to some professional educators, this is one of the most important aims of education. Education should assist a person in becoming what they need to become, depending on their specific potentials. Next is cultural development. Through education, every individual must become sophisticated and civilized. Culture is defined as complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom, tradition, folk ways and religion, etc. Next is citizenship. We educate students to become excellent citizens of their country. Education helps them acquire traits that will benefit society. It makes them aware of their commitments, obligations and responsibilities. Next we have spiritual aim of education, which states that the aim of education is neither national efficiency nor world solidarity, but making the individual feel that he has within himself something deeper than intellect. Call it spirit if you like. Following are the benefits of education: realizing your true potential, sharpening critical skills, creating more employment opportunities, improving the economy, creating modern society, introducing empowerment, the level of moral and ethical values, and it plays vital role in the development of countries. Education increases the literacy rate it, and the wisdom level. Now my next group member will continue. Assalamu alaikum. My name is Khansa Zainab and the topic of my presentation is national research about education. The current literacy rate of Pakistan is 62.3%, which means that an estimated population of 90 million is illiterate in the country. The female literacy rate in Pakistan is 48% and the male literacy rate in Pakistan is 70%. Pakistan has several threading problems and the second most important problem is education. It is a belief that education can solve all the rest big issues that Pakistan is facing today. अगर आपके पास एजुकेशन होगी, आपने तालीम हासिल की होगी, तो आपको पता होगा कि हमने प्रॉब्लम्स को किस तरह सॉल्व करना है, हमें किस तरह सिस्टमेटिक वे में चलना है, हमें अपने फ्यूचर के बारे में पता होगा. और एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि अगर एजुकेशन आपके पास होगी तभी आपका मुल्क तरक्की करेगा, आपकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग होगी, और इसलिए एजुकेशन इज़ मस्ट फॉर एवरीवन. Pakistan is a matter of life and death for education is a matter of life and death for Pakistan. The world is progressing so rapidly that without requisite advance in education, only shall we lag behind others, but may be wiped out altogether. एजुकेशन अगर आपके पास होगी तभी आपका मुल्क तरक्की करेगा, इसलिए एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो एजुकेशन का रुझान बढ़ना चाहिए और हमारे मुल्क में एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा मेंटेन करना चाहिए. हमारे मुल्क में एजुकेशन सिस्टम बहुत ख़राब है. फॉल्स इन द एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान. थ्योरेटिकल एजुकेशन हमारे मुल्क में बहुत दी जाती है, मतलब स्टूडेंट्स को सिर्फ रट्टा प्रोसेस होता है, उनको समझाया नहीं जाता, उन्हें कॉन्सेप्ट नहीं दिया जाता. बेसिकली ये होता है जिसकी वजह से स्टूडेंट बहुत मेंटली स्ट्रेस में होते हैं. आउटडेटेड सिलेबस, नो टीचिंग क्वालिटी, लिमिटेड सीट्स ऑफर. जिससे आपने देखा होगा कि मेडिकल के स्टूडेंट्स जो होते हैं, प्री मेडिकल के, वो एफएससी करके जब निकलते हैं तो उसके बाद उनके लिए सीट्स बहुत कम होती हैं, जिनके बाद उनको अपनी फील्ड से स्विच करना पड़ता है, कंप्यूटर साइंस में या बिज़नेस में या आर्ट्स में या किसी में भी, लेकिन उनको अपनी फील्ड छोड़नी पड़ती है. तो ये बिल्कुल गलत है कि जिस चीज़ में स्टूडेंट का इंटरेस्ट है उसके लिए कम से कम सीट्स तो होनी चाहिए, और हमारे मुल्क में नहीं है. नो कैरियर काउंसलिंग, ये तो बहुत बिग इशू, मतलब बहुत, ये कैरियर काउंसलिंग होगी तो स्टूडेंट आगे तरक्की करेगा. और एजुकेशन बिकम बिज़नेस, एजुकेशन बिज़नेस बन गया. अब आपने अक्सर देखा होगा कि एकेडमीज़ खोली होती हैं लोगों ने छोटी मोटी, और जो जायज़ प्रॉफिट है उससे एक्स्ट्रा वो लेते हैं, और ये बिल्कुल गलत है. Thirdly, we describe causes for not sending children for education. बहुत से कॉजेज़ के हैं चिल्ड्रंस को एजुकेशन के लिए ना भेजने के लिए. पॉवर्टी, यस, इट्स अ वेरी बिग इशू. पॉवर्टी, गुर्बत बहुत है हमारे मुल्क में. गुर्बत की वजह से जिन पेरेंट्स का दिल करता भी है भेजने का, वो गुर्बत इतनी है कि
उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो अपने बच्चों को भेज सकें कि वो तालीम हासिल कर सकें. नॉट इनफ स्कूल्स इन रूरल प्लेसेस एज़ कम्पेयर टू देयर पॉपुलेशन ज़्यादा है, स्कूल्स कम हैं, और जो स्कूल्स कम है उसमें जो स्कूल्स हैं उसमें भी कोई प्रॉपर टीचर्स नहीं है जो उन्हें अच्छा से गाइड करें, उन्हें बताएं. प्रोसेस हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत ख़राब है. नो अवेयरनेस ही मोस्ट इंपॉर्टेंट. अगर आप में अवेयरनेस होगी तभी तो आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप में अवेयरनेस ही नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते. अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नॉन रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिशियंस. हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो अपनी लड़ाइयाँ करते रहते हैं. उन्हें ये नहीं पता कि हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर रहा, हमारी इकॉनमी स्ट्रांग नहीं है, हमारे एजुकेशन सिस्टम बहुत वीक है, थोड़ा सा मेंटेन करना चाहिए, स्टूडेंट्स के लिए कुछ फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, लेकिन नहीं. वडेरा, चौधरी, नवाब सिस्टम, ये जो कल्चर है ये अक्सर जो लोग पढ़ना चाहते भी हैं लेकिन वहाँ पे ये कल्चर की वजह से वो नहीं निकल सकते, जिसकी वजह से ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए. वडेरा, नवाब, चौधरी सिस्टम. सेक्सुअल हरेसमेंट. अब जिन पेरेंट्स ने भेजना भी होता है अपने बच्चों को, लेकिन हरेसमेंट और इन चीज़ों की वजह से पेरेंट्स डरते हैं और थोड़ा सा मसला हो जाता है. नो सिक्योरिटी नहीं है. हमारे मुल्क में सिक्योरिटी का तो बहुत इशू है कि अगर एजुकेशन के लिए आप बच्चों को भेजते भी हैं लेकिन सिक्योरिटी नहीं है, बच्चे सेफ़ नहीं है. स्कूल के बाहर निकले तो अक्सर आपने केसेस देखेंगे स्कूल से बाहर बच्चे अगवा हो जाते हैं, तो फिर इस वजह से सिक्योरिटी नहीं है तो इससे बहुत मुश्किल हो जाता है. इम्पैक्ट्स ऑफ द पुअर एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान. इम्पैक्ट इसके क्या होते हैं पूरे एजुकेशन सिस्टम के? चाइल्ड लेबर. जब एजुकेशन ना दी जाए तो फिर चाइल्ड लेबर होता है जो हमारे मुल्क में आम है. हर चाइल्ड लेबर आपने देखा होगा अक्सर. नो रिस्पेक्ट फॉर डिग्रीज, नो हायर एजुकेशन. रैपिड ग्रोथ इन पॉपुलेशन, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट. हमारे मुल्क में पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट, लोगों के पास जॉब्स नहीं है, इन्फ्लेशन है, हमारे मुल्क में बहुत से इश्यूज़ हैं. और इस समय अगर थोड़ी सी एजुकेशन, लोगों में अवेयरनेस नहीं है कि इनको हैंडल किस तरह करना है. Economic Survey of United Nations. Most of the inhabitants of Pakistan are poor and 40% of them live below the poverty line. About 70% of its population dwells in village. About 300,000 young ones are jobless. ये बहुत बड़ी अमाउंट है जिसमें इतने ज़्यादा मतलब लोग जॉबलेस होंगे तो हमारा मुल्क तरक्की कैसे करेगा? एजुकेशन सिस्टम कैसे? जब लोगों के पास खाने का पैसे नहीं होगा तो वो एजुकेशन सिस्टम कैसे? तो हमारे मुल्क में थोड़ा सा मेंटेन होना चाहिए एजुकेशन सिस्टम भी, थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम थोड़ा मेंटेन हो, बहुत वीक है. स्टूडेंट्स को कुछ फैसिलिटीज़ दी जाएं और ताकि पेरेंट्स के लिए भी आसानी हो जाए. दैट्स ऑल फ्रॉम माय स्लाइड्स. Assalamu alaikum. My name is Zainab Masood and the topic I am going to present is gender disparity in Pakistan. In Pakistan, one can see a wide gender gap in literacy rate of men and women living in both rural and urban areas. People who have settled in cities are comparatively more convinced about sending their girls to school, and the literacy rate in such areas are comparatively higher than rural areas. The norm governing the society is that men are the breadwinners of family and support the household expenses of their children. Therefore, it is justified if money is spent on their education. Many parents do not send their daughters to school as they believe that a girl belongs to her husband's house and her only duty is to raise her children and look after her family. So, in numerous villages, people do not support the idea of educating a female. Roshani Zafar, the founder of Kafsh Foundation, says the perception that investing in girls' education does not result in the economic uplift of families deters parents from sending girls to school. Let's have a look on the illiteracy rate of girls in Pakistan. It has been reported that 32% of primary school age girls are out of school in Pakistan compared to 21% of boys. In Balochistan alone, where the female literacy rate is lowest in the country, 81% of women had not completed primary school compared to 52% of men. Also, 75% of women have never been able to attend school at all. The Global Gender Gap Report 2021 has ranked Pakistan 153 among 156 countries, as the World Economic Forum report said. The dismal state of affairs warrants the immediate change in course of policy to address the widening gender inequality that besets Pakistan.
The next topic is improvement needed in education system of Pakistan. Here we will discuss the area where the improvement is actually needed. The first one is provide transport for children and teachers. Lack of safe transport is a major factor in teacher absenteeism and fatigue. It also affects children attendance. For example, जैसा कि हम देखते हैं रूरल एरियाज़ में स्कूल जो होते हैं एक तो बहुत कम होते हैं, दूसरा वो फार अवे होते हैं होम से, तो वहाँ पे जो सेफ़ ट्रांसपोर्टेशन है वो अवेलेबल नहीं होगी, तो जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को ख़ास करके बच्चियों को स्कूल नहीं भेजेंगे. सो अगर स्कूल वैन की फैसिलिटी अवेलेबल कर दी जाए तो इट विल अल्टीमेटली लो डाउन द इलिटरेसी रेट. So school van transport is a valuable perk for our teachers and students. The second one is identify why children are not in school. Whenever we are addressing an issue, हमें देखना पड़ता है कि उसके पीछे कॉज क्या है. सो जेंडर डिस्पैरिटी की हम बात कर रहे हैं एजुकेशन में, तो इसका बिगेस्ट फैक्टर क्या होता है? इकोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको चूज़ करना पड़ता है बिटवीन वर्क एंड स्कूल. In an ideal world, we would be able to demonstrate the link between schools and future earnings. The thing we need to get better is at promoting the value of education to parents and students. Next one is get the private sector to offer more scholarship. Government जो है वो private schools को attractive packages दे सकती है. जैसा कि गवर्नमेंट है, एक प्राइवेट स्कूल चल रहा है, गवर्नमेंट उसको ऑफ़र कर सकती है कि हम आपके बिल्स में कमी कर देंगे, यूटिलिटी बिल्स में जो आपके बिजली और पानी के बिल हैं उसमें हो जाएगी कमी, अगर आप अपने स्कूल का 10% जो पार्ट है वो अवेलेबल कर देंगे फ्री फॉर पुअर चिल्ड्रन. सो इस तरह क्या होगा, जो पुअर चिल्ड्रन हैं उनको एजुकेशन मिलेगी और जो है इलिटरेसी रेट जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज़ करेगा. So this could be especially effective in the areas where government schools have failed to reach. The next one is scrap teaching in English. We focus on English too much, which is why we have ended up with so much rote learning. बहुत से टीचर्स जो हैं वो खुद वेल कॉम्पिटेंट नहीं हैं इंग्लिश में, लेकिन वो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं. इनफैक्ट दे आर नॉट टीचिंग इंग्लिश, दे आर ट्राइंग टू टीच इंग्लिश. इसी तरह बच्चे जो हैं वो कॉन्फिडेंट है अपनी लैंग्वेज में, कॉन्फिडेंट है, दे आर कॉन्फिडेंट इन देयर ओन लैंग्वेज, बट दे कैन नॉट पिक अप द इंग्लिश लैंग्वेज, सो दे आर कंसिडर्ड डम्ब. द नेक्स्ट one is collect a wider variety of data. Most government data is focused on just school building contracts and teachers' salaries rather than on what the students are learning, how they are learning and where they are learning. So if we want to educate our females, it is important to provide secure, safe and well-equipped schools for females and for the prosperity of our countries. So I would like to end up by saying an educated man can only build himself as an individual, but an educated woman can build herself as someone who serves the entire nation by raising an enlightened generation. This is all from my side. Thank you. Assalamu alaikum. My name is Iman Mubin and I am going to discuss the international article on education. This article is a research article by UNICEF. UNICEF stands for United Nations Children's Fund and its full form is United Nations International Children's Emergency Fundraising Country. The major goal of UNICEF is to raise funds by governments and their other partners and to remove barriers for girls and boys in education field and to also promote gender equality in education field in spite of all the challenges faced by the people. In our whole world, total 129 girls are there which are not going to school. In world, 49% countries are only there who achieve gender equality in primary education, still in the primary education, not the higher education. Now we are going to discuss the solution regarding to the gender inequality in education field. First of all, the following are the major solutions regarding to it is early childhood education, ECE, alternative learning pathways, ALP, school community linkages, equity in education. Now we are going to discuss early childhood education, ECE. Investment in quality learning
quality learning or pre-primary school education, so that the young children get motivated or ready to go to school for their higher education, and this causes a positive impact on primary school enrollment, and it is also very cost effective. Next we have alternative learning pathways, ALP. In this, UNICEF is addressing the issue of OOSC. OOSC is the special training of out of school children. In this we are forming a plan regarding for the children that skip their schooling for a year. Next we have school community linkages. In social culture, in school community linkages, our culture and our economic factors are the major barriers in the education deprivation for certain group of children. Many of the children are skip their schooling because of their economic conditions, and because of their culture. The girls skip their education for because of their culture, and some girls are skipping their education because of the economic factor. Both the things are, culture and economic factor are doing the same role or major role in education deprivation in or illiteracy in many countries. The last is equity in education. Equity based in education is the investment by government. Government should do investment, and it is the key way to ensure education system, and it is the most important for the disadvantaged girls and boys, and due to this investment they get advantage and they get different opportunities to get education. Thank you. This is all from my side. Assalamu alaikum. My name is Iram Mubashir. The topic of my presentation is Food for the Poor Canada article. Worldwide 129 million girls are out of school. इसमें ये बताया है कि पूरी दुनिया में जो 129 मिलियन गर्ल्स ऐसी हैं जो स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं जाती. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, द डिजिटल डिवाइड इज़ एक्सपेंडिंग द जेंडर गैप फॉर इंटरनेट यूज़र्स हाउएवर एट 43% फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़. इसमें ये बताया है कि अगर 100% रेशो है तो उसमें से जो 43% है वो हमारे पास जेंडर गैप है. इसके बाद इन कटिंग एज फील्ड सच एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओनली इन 5 प्रोफेशन 22% इज़ वुमेन. इसमें यह है कि अगर टोटल 5 प्रोफेशंस हैं तो उनमें से जो एक प्रोफेशन है वो हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और 100% में से जो 22% हैं उसमें वो वुमेन है. वी रिकॉग्नाइज 11 अक्टूबर द इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल. इसमें जो हमने 11 अक्टूबर में जो है वो 11 अक्टूबर को हमने इंटरनेशनल डे ऑफ जो गर्ल है वो हमने सेलिब्रेट किया था. इसके बाद जो आता है वो हमारे पास है जी, बैरियर फेस्ड बाय गर्ल्स इन असेंडिंग एजुकेशन. इसमें हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं. नंबर 1 है जी कॉस्ट, फिर जेंडर बाइस, मेंसुरेशन और हाउस होल्ड चोर्स. In cost, we will discuss that in our society, parents prefer to educate their sons instead of their daughters, क्योंकि वो ये समझते हैं कि लड़कियों की शादी हो जानी चाहिए तो उन्हें पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है. नेक्स्ट है जी जेंडर बेस. इन जेंडर बेस वी विल डिस्कस अबाउट जेंडर मेल और फीमेल. इन दिस वी डिस्कस दैट पेरेंट्स डोंट लेट देयर डॉटर स्टडी मच because they think it's just the waste of money, because daughters will get married and will go to another house. On the other hand, parents prefer to educate their sons more because they think that their sons will earn and will support their parents. नेक्स्ट पॉइंट इज़ मेंसुरेशन. मेंसुरेशन में ये हमें बताया गया है कि जब लड़कियों के पीरियड्स वगैरह स्टार्ट होते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें स्कूल से, कॉलेज से उठवा लेते हैं ताकि वो लोग घर में रहें और अपने जो मेंसुरेशन साइकिल है वो उसको घर में कंप्लीट करें और वो बाहर ना जाएं. जिस तरह अब तो पीरियड्स बहुत छोटी एज में भी बच्चों को हो जाते हैं, यहाँ तक कि 6-7 क्लास में भी लड़कियों को स्टार्ट हो जाते हैं. तो वो उसके बाद से फिर लड़कियों का बाहर जाना या लड़कियों का खेलना वगैरह सब बंद कर देते हैं, जबकि ये गलत है. लड़कियों को बाहर जाने की आज़ादी देनी चाहिए. उसके बाद हाउस होल्ड चोर्स में हमारे पास ये आ जाता है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास हाउस होल्ड चोर्स का है. उसमें हमारे पास ये आ जाता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो लड़कियों को ज़्यादा नहीं पढ़ाते. वो कहते हैं कि अगर लड़कियां ज़्यादा पढ़ लिख गई तो वो फिर आगे जॉब करेंगी और वो फिर घर के काम वगैरह नहीं कर सकेंगी. तो वो घर के काम वगैरह करने के लिए वो कहते हैं कि लड़कियां स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ ना जाएं, वो घर बैठें और घर के काम वगैरह करें. दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड.